हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। So today our topic of discussion is to prove a formula that's called cos x plus cos y equals to 2 cos x plus y by 2 and cos x minus y by 2. And the second is cos x minus cos y, that's equal to 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2. So I have shown you two formula, but those are same to prove. I have just proved on the first formula, and for you I have just give you the second. You have to prove yourself you by seeing the first formula by which I have proved my formula. Okay. So if you don't subscribe my channel till now, so go and subscribe now. Okay, so today start my video. So for proving the first formula, you have to remember two formula that are already I have proved in my channel. If you don't see, go and check out. The first formula is cos x plus y, that's equals to cos x cos y minus sin x sin y. That is formula number 1, which you have to remember. And the formula number 2, that is cos of x minus y, that is cos x cos y plus sin x sin y. This is the formula number 2. So actually, and then what we have to do for the cos x plus cos y, the first we have to adding and substitute formula number 1 and 2. So we have to add and substitute formula 1 and 2. What I get? Okay. For the proof of the first formula, at first we have to add the formula 1 and 2. That's called cos x plus y plus cos x minus 1. And from the right hand side, what it is? Cos x cos y minus sin x sin y plus cos x cos y plus sin x sin y. That's exactly cut. So what we get? 2 cos x cos y, and from the left hand side, what we get? Cos of x plus y plus cos of x minus y. That is the formula number 3 we have added. Okay, what do we do? Let x plus y equals to theta and x minus y equals to phi. So एक्चुअली हमें क्या करनी पड़ेगी? इसको cos x प्लस cos y करने के लिए हमें इसको पहले रिप्लेस करनी पड़ेगी। क्या? x प्लस वाई को थीटा से एंड x माइनस वाई को फाई से. ओके, सो लेट ए देन द फार्मूला नंबर 3 क्या होगा? cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ फाई इक्वल टू 2 cos. ओके, x क्या होगा? x होगा, ये भी एक चीज़ है, ये जो दो है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू थीटा और x माइनस वाई इक्वल्स टू फाई, इससे हम क्या निकलेंगे? अगर इसको a फॉर्मूला ले लिया और इसको b ले लिया, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई. दैट एग्जाम्पल इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई, x इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई बाई 2. ठीक ना? तो
यहाँ पे हम x को रिप्लेस करके क्या बैठाएंगे, ये जो x है ये होगा थीटा प्लस 5/2। इन सिमिलरली अगर यहाँ पे तुम ए माइनस भी करोगे तब क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थीटा माइनस 5 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, y इक्वल टू थीटा माइनस 5/2, दैट इज कॉस थीटा माइनस 5/2। हो गया, कैसे हो पता चला ना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअली अगर तुम ठीक से देखोगे ना तो मेरा फार्मूला ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, ठीक ना। कैसे हो चुका है अब देखो, सिंस थीटा एंड फाई कैन टेक एनी रियल वैल्यू, so we can replace क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, थीटा बाई एक्स एंड फाई बाई वाई। तब ये फार्मूला क्या होगा, फार्मूला 4 क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा एक्स से, सॉरी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई। तो तुम्हारा प्रूफ हो गया थ्योरम, ये देखो यही था ना जो प्रूफ करनी थी हमें, एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2, सो दैट्स ऑल प्रूफ। और जो दूसरा है वो तुम लोगों को लिए मैं होम टास्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग खुद करना, अगर दिक्कत होगा तब कमेंट पे बोलना, तब कर देंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।